Hello students, in this video we will discuss on problems related to inverse trigonometrical functions. So we will start with the basic formula. Sin inverse x plus cos inverse x equals to 90 when x belonging to minus 1 to plus 1. Tan inverse x plus cot inverse x equals to 90 when x belong to real number, and sec inverse x plus cosec inverse x equals to 90 when x belonging to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. Okay, so first question is if tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square equals to 5 pi square by 8, then what will be the value of x? Actually here tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square, it is just like a square plus b square. So we can write a square plus b square as a plus b whole square minus 2ab. Okay, so we will convert it. Tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square equals to this as tan inverse x plus cot inverse whole square minus 2 into tan inverse x cot inverse x equals to 5 pi square by 8. Now you put the value of tan inverse x plus cot inverse x is equal to 90. So it is 90 square minus 2 tan inverse x, and we will convert cot inverse x as 90 minus tan inverse x and then equals to 5 pi square by 8. So after arranging this expression, we can write 2 tan inverse x whole square minus pi tan inverse x minus 3 pi square by 8 equals to 0. See, we can factorize this like tan inverse x plus pi by 4 and 2 tan inverse x minus 3 pi by 2. This is equal to 0. Okay, so either this equals to 0 or this equals to 0. When this equals to 0, tan inverse x equals to minus pi by 4, and when this equals to 0, it is tan inverse x equals to 3 pi by 4. So in all cases x equals to minus 1 satisfy the condition. Okay, so the solution is x equals to minus 1. Let's move on the second question. Let y equals to sec inverse x whole square plus cosec inverse x whole square, then what will be the minimum value of this expression? Okay, so in a similar way it is also of the pattern a square plus b square. So we can write it this plus this whole square minus 2 into a into b type. Okay, so we put the value of sec inverse x plus cos inverse x 90. Okay, so it is 90 square minus 2 of sec inverse x, and we will convert cosec inverse x as 90 minus sec inverse x. Okay, so it is pi square by 4 plus 2 sec inverse x minus pi sec inverse x. Okay, so take 2 outside the bracket, so it can be write like sec inverse x whole square minus 2 into pi by 4 into sec inverse x for this. So add pi square by 16, so it is actually pi square by 8. So subtract pi square by 8. Okay, so ऐसा लिखने से फ़ायदा ये है कि it will convert in a whole square. So it is 2 sec inverse x minus pi by 4 का whole square, and this minus this will be pi square by 8. Now all of these is equal to this is equal to actually y. Okay, so see, this is positive and this is positive, so positive plus positive is also positive. So minimum value of positive number is actually 0. So for y minimum this term may be equal to 0. So when this is equal to 0, we can get minimum value of y. So put this equals to 0, so it is equal to pi square by 8. Okay, so we can say that y minimum is pi square by 8 at what value of x? So when we put this equals to 0, it is sec inverse x is equal to pi by 4. That's why x equals to sec pi by 4, and sec pi by 4 is root 2. So at x is equal to root 2, we can find y minimum, and this is pi square by 8. Okay, now
another question is this is like y equals to fx, and it is sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube, right? So we have to find f minimum and f maximum, means इसका हमें maxima and minima निकालना है. So we will not move in calculus method. Actually we are working here in inverse trigonometrical function, so we will solve this in inverse trigonometrical functions type method, right? So okay, so this is of type aq plus bq, so it can be right like a plus b whole cube minus 3ab a plus b. So put here at like this, sin inverse x plus cos inverse x whole cube minus 3 into a into b, a plus b. So in every sin inverse x plus cos inverse x into converted into pi by 2. Okay, so put here pi by 2, put here pi by 2. Okay, so it is pi by 2 whole cube minus 3 sin inverse x, and convert cos inverse x pi by 2 minus sin inverse x. This is, so after arranging this, we will find pi cube by 8 plus 3 pi by 2 sin inverse x whole square minus pi by 2 sin inverse x. Okay, so in a similar way we can write this as a square of something. Okay, so arranging this we can get pi cube by 8 plus 3 pi by 2, and this is sin inverse x whole square minus 2 into pi by 4 sin inverse x plus pi square by 16 minus 3 pi square by 32. Okay, so it is extra, that's why it is plus and minus we have taken here. And we can arrange this like sin inverse x minus pi 4 whole square, and it is multiplied by this, and after subtracting this into this, it is pi cube by 32. Okay, so pi cube by 32 plus 3 pi by 2 sin inverse x minus pi by 4 whole square. अब आपको यहाँ इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसको जीरो करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि यही जीरो हो सकता है ना, ये तो कॉन्स्टेंटली जीरो हो नहीं सकते ना. सो इट इज़ इक्वल टू जीरो. तो जब ये जीरो होगा तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 आएगा, यानी एक्स का वैल्यू 1/√2 आएगा, और उस टाइम ये टर्म पूरा जीरो होगा तो ये वैल्यू होगा, यानी एफ मिनिमम इतना होगा. लेकिन किस वैल्यू पर? एफ मिनिमम का वैल्यू पाई क्यू बाई 32, बट एट वाट एक्स? सो एक्स इक्वल्स टू 1/√2, बिकॉज वेन एवर साइन इनवर्स एक्स minus pi by 4 equals to 0, this implies sin inverse x is equal to pi by 4, मतलब x is equal to sin pi by 4, यानी 1/√2. That's why at x equals to 1/√2, function has its minimum value, and minimum value is pi cube by 32. Now एफ मैक्सिमम कैसे निकलेगा? सो इस एक्सप्रेशन में आइए. आप इसका मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है? आपको ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली -90 से +90 के बीच मूव करता है. तो अगर आप यहाँ 90 रखेंगे तो 90 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16. बट अगर आप -90 रखेंगे तो -90 माइनस पाई बाई 4 -3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, वो आएगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16 एक्चुअली, है ना. तो वो ज़्यादा वैल्यू होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन वी पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90. सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -90. दैट्स वाई दिस टर्म विल गेट मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो put sin inverse x equals to -90. So this will give 3 pi by 4 का whole square. So the maximum value is pi cube by 32 plus 3 by 2, और इसका maximum value कितना है? 3 pi by 4 का whole square. So after solving this, 7 pi cube by 8, it is the f maximum value. Okay, 7 pi
cube by 8, it is maximum value of function. So f minimum pi cube by 32 and f maximum 7 pi cube by 8. Okay, next question is if you know that sin inverse x plus cos inverse x equals to 90, and when x belonging to minus 1 to 1, then solve sin inverse x greater than cos inverse. इसे हमें solve करना है ना. तो you know that sin inverse x is greater than cos inverse is given, so put sin inverse x is greater than and convert it into sin. So 90 minus sin inverse x, so it is 210 sin inverse x is greater than 90. That's why sin inverse x is greater than pi by 4. Pi by 4 it means x is greater than 1 by root 2, बट x क्या है, -1 to 1 के बीच का ही कोई नंबर है, राइट. मतलब ऐसा है कि -1 से 1 के बीच का ही कोई नंबर है x. ये कंडीशन इधर से आया जो ओरिजिनल कंडीशन है, और इन्होंने बोला कि x का वैल्यू 1 बाई रूट 2 से ज़्यादा होना चाहिए इधर. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल कॉमन है. दैट्स वाई आंसर इज 1 बाई एक्स बिलोंगिंग टू 1 बाई रूट 2 से 1, ये वाला. ओके, 1 बाई रूट 2 से 1, दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, सो इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस पर डिस्कस किए. आगे मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस ITF के लेके आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ. ओके, आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अपने ढंग से भी करें, बहुत सारे अलग अलग मेथड से भी ये सॉल्व हो सकता है. सो ये एक सिर्फ आइडिया आपको मैंने दिया है, आप इसको और अच्छे तरीके से करें, आपको और अच्छे आइडियाज़ आएंगे. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू, बाय बाय.